decision, investment appraisal, that you know that what are the criteria which investment has to be evaluated. So being a kind of a prerequisite or compulsive exercise, even if it has not been placed into the syllabus, I have to compulsorily bring it to you. Maybe one additional session meant for it, but that will be a great help, and it will be help to you as well to understand it, how it is going to work. See, various return term has been given. Return is nothing but it is return which is coming to. And in the previous session also I had mentioned that when we consider return, there are two returns which are very important called expected return and required return. And if your expected return is higher than equal to required return, then only there is a point of investment. Whatever you are expecting, if that you are receiving, then only you will invest. Otherwise not. I require 12%, if 12% is not coming, it is not expected to come. But actual return may be different. Actual return may be higher. That could be a bonanza. I am expecting 15% return. Return came 18%. That's a good for me. Though it is also called as deviation, and every kind of deviation is risk. So this is called risk, but it is a pleasant risk. What you wanted, more than that you have received. Whereas some other returns are also there. How to understand what kind of return has been there in the past is called historical return. That could be sometime a kind of guide that this kind of company has performed. So this kind of sector has performed. That will be a historical return, will be a great help. You can say that for last 10 years this kind of return has been there and there is a potential to continue with that return. Or it could be nominal return and real return, which I had already mentioned you related to inflation. That nominal return is without any inflation consideration. Real return is after deducting inflation from the nominal return. If I am getting a return of 7% on my deposit from the bank, now question is it my return is 7% return in real term? Answer is no, because 6% has been eaten away by the inflation. So it is my only 1% is the real return. That's the way we have to have. So thumb rule could be there, nominal return minus inflation is equal to real return. And it is the real return which has got a parity with the rest of the world. So many places real return is going to come. Now next is effective return. That also I think I had calculated, taking 12% of the rate. Do you remember? Yes or no? 12%, because it is effectiveness is changing because of change of frequency of the compounding. If compounding frequency is annual, effective and nominal is going to be same. Given rate is going to be same. But if effectiveness, if its compounding is going to be more frequent, say semi-annual, 12% can convert into 12.36, quarterly 12.55, monthly 12.68, daily 12.74. This is what we have calculated last time. This is what effective rate is there. And how practically market uses it, I had already mentioned to you. Single period return is your holding period is just 1 year, or given any period, maybe quarter, maybe 1 day, maybe 1 month. That depends what is your return in that given period. So single period is normally considered 1 year. Holding period is also their return. Holding period is the period for which you are holding it. Someone may be holding just for 1 day. There is an entire big financial market, interbank market between banks it is operating, called call money market. Borrowing in the morning, returning in the evening or after, next day. That's a very big market, huge market. So period is a holding period, you decide, but rate always represented in per annum basis. Similarly, multiple period return. Why multiple period becomes important? Because of two natures. First one is that, do your return take it back? Means if suppose some return has been there, say even in bank deposit you made it for 4 years deposit. Today I deposited an amount for 4 years. Even if the smallest frequency of compounding will be there, at least annual compounding will be there. So after 1 year an interest will be coming to you. Will you be receiving that interest, taking it out? Then your principal will not get affected and principal will remain same. But the moment that interest is going to get added to the principal amount, you are not withdrawing back, then it is called compounding in nature. And then next year principal amount will be more, and when principal will be more, principal is what? It is base. Base will be more, so interest will be higher in next year.
and that will keep on compounding. So whenever we are using the word compounding, a back of mind, it is very clear, in between whatever gain is there, you are not going to take back. Same could be applicable in a different way. In your company, when your net profit comes, you have prepared income statement, your net profit has come. Now question is, are you taking the entire net profit in the form of dividend and distributing it? That is a very important, I think unit 4 is going to talk about that. So you are going to distribute the entire amount of profit in the form of dividend, or you are going to keep 100% in the form of retained earning, plowing back without distribution. So these are the certain questions you have to answer, and that is what we are going to discuss on those topic, how to take this call, what to do. Or there is going to be a combination of retention and distribution. Some portion of net profit is going to be distributed, some portion will be retained. How that call will be made, how that decision will be made. These are the certain policy issues. Very important. Rationale has to be there, economic rationale has to be there, certain explanation has to be there. You have to be careful related to your holders of the share, how they are going to get benefit. Next is perpetual return. We have already discussed, and I think I had mentioned how perpetual return could be used for award and all those prizes, where DYK or whatever amount is there divided by rate is going to be perpetual in nature. One question we had sorted accordingly. Then fixed return, generally in bank deposits. Variable return, shareholdings, how much return will come, you don't know. Business, we don't know how much return will be there, that could be variable in nature. Portfolio return, instead of having a single return, portfolio return could be there when you are distributing your investment not in one instrument, in many instruments. That is portfolio. So portfolio return is also going to be very important. And yield. Return word I have kept on using. There has been a word cost from the borrower's point of view, and yield is from the investor's point of view. What actually you invest. Suppose a share of, now I am giving you a real practical meaning of yield, and then you can use it as a part of calculation. Suppose there is a share which has got a face value of rupees 10. And that face value of rupees 10 shares has announced 100 rupees of dividend. Understand? What is the face value of share? 10 rupees. And dividend announcement by the company is 100 rupees per share. Company will say we are giving 1000% dividend. And it is practically correct. Practically correct. That's the way. Any financial newspaper you will study, you will find out in the font size of 40, it will be written X company has distributed 1000% dividend. People will be very, amazed to see this. But practically it is available in the market at say 2000 rupees. At what price it is available in the market? 2000 rupees. And the share which I had purchased, it was at 2000 rupees. So 100 rupees is coming after 1 year of holding. How much percentage? 100 upon 2000. How much percentage? 5%. Company is announcing 1000% of dividend. Investor is getting 5% of yield. Because I am buying at 2000 rupees. I am not buying at 10 rupees. 10 rupees is mere face value. You will find out a good number of shares having face value 1 rupee and available at 4000 rupees. Now question is 1 rupee, so every time dividend declaration will be something like that, which is actually theoretically company law says that you have to declare dividend on face value. Right? That's the way it is. So you have to be very careful what exactly the term is. I am least bothered what is the dividend. I am bothered how much yield I am going to get, or my investor is getting how much yield. Yield is important. Right? So let's look at calculation. Risk is also very important. Whatever you had expected may not necessarily be coming like that. So it is going to be deviation from expectations. If you don't have expectation, there is no risk. If you don't have expectation, there is no risk. And quickly I will give you 2-3 good statements related to risk. That suppose a toss is there, you are tossing the coin, and tossing the coin,
has got two outcomes, head or tail. You keep tossing whether it head comes or tail comes, I am least bothered. I am not concerned. It is not a risk to me. But the moment if I am a captain of a team and the winning the toss is going to decide my rest of strategies, certainly it makes a lot of things. And I am expecting head, coming tail is the possibility or probability of coming tail is, or not coming head is my risk. Is it clear? That is deviation. How it is going to be measured? Mean deviation. So whatever number of observations are there or whatever the past observations are there, take the mean of it. Once you take the mean, so your value is there, calculation will come. Absolute, no, not absolute right now. Right now we are just simply talking mean. Taking care of mathematical sign. We are just taking mean. Okay. So what will happen? Suppose 5, 7, 9, 10, 12, these are the figures. Take sum divided by number of observations. If it is historical figure. If it is historical figure. If it is a futuristic figure, there will be a probability associated to happenings. So summation of pi xi, which is probability multiplied by observations. That sum will be your mean. And then you have observation minus mean. That is deviation. X minus x mean. Keep on summing that. It might be possible some figure will be negative, some figure will be positive. And they will cancel out each other. If it is uniformly distributed, normally distributed, it will be cancelling out each other. So your deviation will be very minimum. Sometimes it is perfectly normally distributed. Then in that case, 0. Doesn't mean deviation is not there. What practically I mean to say here is, if suppose this is the statistical blunder can be there, a statistical conclusion is not wrong, but blunder will be there because sometime mathematical sign doesn't mean mathematical operation. Be very careful. If suppose I say what is negative, there is no negative quantity in the world. Negative is mere a context, concept. If I am earning, it is positive. If I am borrowing, it is negative. How it makes a difference if I have borrowed amount and then I am buying in the market? It has got same potential to purchase. If I am standing here, right side is my positive, left side is negative. That is what the way it is going to be. So how it is going to get calculated? Suppose I am at a very elevated high wall, right side is 100 feet down, left side is 98 feet down, left is negative, right is positive. I summed up both the sides, 100 minus 98 makes 2 feet. I felt that 2 feet I can take easily jump, so any side I can jump. And that is called a statistical blunder. In finance, unknowingly people do these blunders. And saying that statistics has been applied. Sorry, don't do that. Clear? Because it is not negative, positive, it is both the sides, you have to look minutely. So what is the correction? Correction is mean absolute deviation. Absolute deviation. Ignore the sign. Use modus. So negative, negative, positive, anything you add up. Mathematician got angry. How can you ignore mathematical sign? उनको भी तो खुश करना है. Then in that case, there is a very interesting part. One mathematical operation issues can be handled by another one. बोला ऐसा करते हैं, आपको स्क्वायर कर देते हैं. तो नेगेटिव का स्क्वायर और पॉजिटिव का स्क्वायर. मैथमेटिशियन बहुत खुश हो गए और आ गया महेंद्र सिंह धोनी, MSD. इज इट क्लियर? क्या है? मीन स्क्वायर डेविएशन, also called variance. There is a technical difference between variance and mean square deviation at some place beyond the scope of the present talk. So it is a variance. अब फाइनेंस और इकोनॉमिक्स वाले नाराज हो गए, बोले छोटा सा रिस्क को आप डरा के बड़ा बना रहे हो. रिस्क हैज बीन 4, you are showing 16. रिस्क हैज बीन 5, you are showing 15. So 25. A risk is 10, you are showing 100. Don't magnify it. बोला पुनः मुसिको भव. क्या कीजिएगा स्क्वायर के बाद? स्क्वायर रूट.
तो स्क्वायर रूट करने के बाद अल्टीमेटली क्या निकला, फाइनली जो स्क्वायर किया था वो वापस नॉर्मल सी पे आ गया. एंड दैट इज two ways. It is what the normal mathematicians are also happy. We have not ignored the sign. Economists are also satisfied. We have brought it back to their normalcy, and that's why they call it standard deviation. What is the word is used? Standard, a standard for everyone, and it is a measure of risk. It gets calculated that way. So keep calculating. Let's look into the numerical questions. Quick, fast calculation. How the market return is there. I am assuming you all are individual investors who have to look upon the investment sites, and in this investment sites how you are going to work. I have taken three different returns. First return is the return from the alpha, second is from the beta, third one is from the market index, maybe Sensex, maybe Nifty, maybe S&P, maybe Nikkei, anyone. Market return, here you can consider it is Sensex. Now I am taking that after 1 year of time, what kind of return I will get if I invest in alpha. Since it is related to future, I am not sure that what kind of exactly, it is not a fixed return case. This is the case of a return where I can have a various probability assigned. Now a question is, one can ask very interesting this question, that how can it be possible a probability is applied to all three same. Understand one very important from economic perspective, these probabilities are conditions of the market. I can consider what I am expecting from the market. Will it be bearish market? Will it be down market? Will it be normal range bound market? Will it be little up market? Will it be bullish market? Will it be jubilant market? I am not applying probability to the X, Y or alpha, beta or market. I am applying probability to economy. What kind of economic condition will be there? How it is going to work? That economic condition I have applied the probability, and I have mentioned it that there is a 15% probability. Look into the first column. 15% probability market will be very bearish. चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है, वर्ल्ड इज ऑन द रिसेशन गेट, इंडिया कब तक अपने आप को अलग रखेगा? मेरा अपना परसेप्शन है 15% चांसेस है वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंडिया की भी इकोनॉमी डाउन हो जाएगा. You can attach it. This is the point from where the management and economic discussion starts. It might be possible, what is the probability? Again, the same prime minister is going to repeat in 2024. And if not, the different prime minister will come. What is the probability? What kind of economic turnaround will take place? Apply the probability, apply the market. So I am applying it 15% chances. Market will be bearish, very down, crash करेगा. 61,000 से हो सकता है 40,000 आ जाए, मेरी सोच है. उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने कितना असाइन किया? कितना प्रोबेबिलिटी असाइन है? 15%, 15. बट आई एम 25% कि इतना डाउन भी नहीं होगा. ठीक है, 40,000 नहीं जाएगा. 25% चांसेस इट विल बी डाउन, बट नॉट दैट बेयरिश. Clear? 30% chances I am giving it will be a range bound. Another 15% I am giving it will move up. 10% very up. And 5% jubilant. Marvelous record. India will be the Vishwa Guru. Reflected through a stock market also. Maybe 61,000 will be touching after 1 year, 75,000 of index. हो सकता है ना? This is the probability it has been given to economy. Then I have selected one company called Alpha. Alpha could be anyone. Question arises that what kind of alpha will perform depending upon these conditions? If market is really bearish, then what kind of alpha will be giving you result? And alpha is positively correlated with the market conditions. So when it is a bearish market, alpha will be giving you very disappointing result. It may be a negative return, alpha will be in red. Minus 5% return I have given. Clear? How much return I have given? Minus 5%. This is my heuristic example, hypothetical example given that कि मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश करेगा, अल्फा बहुत बुरा परफॉर्म करेगा. मार्केट डाउन है तो अल्फा जो है क्रैश नहीं किया है, मार्केट डाउन है, अल्फा 5% रिटर्न देगा.
बट जैसे जैसे मार्केट अच्छा करेगा अल्फा का रिटर्न बहुत अच्छा होता चला जाएगा. दैट इज व्हाट आई हैव प्रोजेक्टेड. दिस इज माय फोरकास्टिंग. I am trying to make economic sense, financial market sense out of my numerical question. It's a reverse order of study. Understand that why I have taken these figures, and then magical calculation will start afterward. Then you go back to the beta. Beta has got a diverse negative correlation, adverse correlation with the market. There are three types of companies: positively related, negatively related, half related. Sometimes some company perform really very good when market is down. That kind of sector, what kind of things will be there, that you will study in security analysis. यही आपका फाइनेंस का उस समय सब्जेक्ट आएगा. कैसे सेलेक्ट करोगे कि फार्मास्यूटिकल कैसे परफॉर्म करेगा, एजुकेशन सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा, पेंट इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगा, ऑटोमोबाइल कैसे परफॉर्म करेगा, बैंकिंग सेक्टर कैसे परफॉर्म करेगा. ये सारे सेक्टर के परफॉर्मेंस आप उस तरीके से देखोगे. इकोनॉमी तो सेम है लेकिन अलग अलग सेक्टर का परफॉर्मेंस अलग अलग है. पेंडेमिक सबको रुलाया, कुछ सेक्टर को काफ़ी हंसाया. इतना कमाई दे गया कुछ सेक्टर को जो अगले 10 साल के लिए उनके पास कमाई रिजर्व है. होता है, हर कोई नेगेटिव नहीं होता, राइट. तो दैट्स द वे इट वर्क्स. सो दैट्स व्हाई यू विल फाइंड आउट इन द बीटा लिमिटेड देयर इज अ रिवर्स ऑर्डर ऑफ रिटर्न. Whereas market is, as per market is an indicator of the economic performance, that's why market will be always positively return. So index performance is also there. That index performance is coming up. Now here, the first, this is the point which you will get, and now question is how to calculate return and risk. And that's why your last row is question mark. From here, our contribution calculation starts. So upside is your question, now answer. Okay, how it works, that's very important. I hope the question, condition and context of question is clear to you all, and what we are going to have after giving this matrix, this table, this information along with the probability assigned. A small one line, calculate return and risk from this investment. Clear? And question is there. 5 नंबर 7 नंबर लगा देंगे, हाफ क्वेश्चन कर देंगे, क्वेश्चन रेडी है. रिटर्न कैलकुलेट कीजिए, रिस्क कैलकुलेट कीजिए. अभी थोड़ी देर पहले रिस्क को मैंने मीन डेविएशन से लेते हुए स्टैंडर्ड डेविएशन तक यूज़ किया था. अब वो उसका रोल यहाँ कैलकुलेशन में आ गया है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आप क्या करो कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय ऑब्जर्वेशंस, 0.15 मल्टीप्लाइड बाय -5 प्लस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 10 एंड सो ऑन. यू कीप ऑन गेटिंग, इट विल बी अल्फा मीन. सिमिलरली इस प्रोबेबिलिटी को बीटा वाले से अप्लाई करोगे तो बीटा मीन निकल आएगा. और अगर फिर मार्केट से अप्लाई करोगे तो पहले कॉलम को दूसरे से मल्टीप्लाई कीजिए, निकल आएगा. पहले कॉलम को तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए और सबको सम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए. देयर इज नो फर्दर डिवीजन बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड फिगर्स. दिस इज फ्यूचरिस्टिक फिगर्स, इट इज नॉट डिवाइडेड बाय एन. और अगर कभी मेंटली ये हो भी जाए कि साहब हमने तो मीन निकालने में डिवाइडेड बाय एन किया था, तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी योर डिनोमिनेटर एंड समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी विल बिकम हाउ मच 1. तो आपका वो जो अंदर का जो परेशानी है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा. लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, डिनोमिनेटर 1 करने की ज़रूरत होती नहीं है. इज इट क्लियर? अब कैसे करेंगे? तो ये कैलकुलेशन है. आई नो दैट यू कैन कैलकुलेट बट आई हैव लिटिल टाइम, आई विल गो अहेड. कैलकुलेशन आई हैव डन फॉर यू. हाउ मच इट हैज़ कम? For alpha 9%, for beta 10.7%, and for index it is 10.05%. This is the mean return we are going to get. Time being index we drop. I am repeating, time being index I am dropping. I am simply calculating how mean return and
of alpha and beta could be used. If it is a matter of investment, where you will like to park your fund, alpha में या beta में? Now mean return, expected return of the two is given to you. किस में करेंगे पार्क अपने फंड को? बीटा में करेंगे. Why beta? Because it is giving you better return. Yes or not? और इंटरेस्टिंग पार्ट एक बात बताऊं आपको, जब मैंने सारा कैलकुलेशन करके ऐसे ही फिगर उठा के डाल दिया तब मुझे रियलाइज हुआ मुझे क्वेश्चन के साथ थोड़ा और खेलना चाहिए था. टाइम कम है, फिर कभी खेल लेंगे. इट्स अ रीजन इज वो एब्सोल्युटली बीटा क्लियर कट विनर बन के निकल रहा है. इवन ऑन द रिस्क मैटर, आई लेट यू नो. What is important is not only the return, it is risk is also very important. So what is risk? How to define risk? How to define risk? Deviation from expectation. So when deviation from expectation, so you have expected return of 10.7 or 9 or 10.05. So what I suggest that now you calculate risk associated to it, and which one is the comparatively better measure of risk? कौन सा है सबसे अच्छा मेजर ऑफ रिस्क? स्टैंडर्ड डेविएशन. इज इट क्लियर? सो लेट्स कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. दिस इज फॉर अल्फा. नाउ आई हैड थॉट ऑफ आई शुड गिव यू टाइम टू कैलकुलेट, but it's better you can calculate afterward. You can keep on clicking, you can do it afterward. Understand how it is going to be there. Now we have already known mean of this is 9. So how you are going to calculate? R minus R mean. R is return minus mean return. Return is a specific observations. So we are making it. So your third column is going to give you deviation. Make a square of it so that sign could be taken care of. Or after making a square, multiplied by probability. Once you multiply by probability, you will get that final value. Take a summation of that, and that summation will be what? Variance. Very good. That summation will be variance. And what is the standard deviation? What is the relationship between a standard deviation and variance? A square root. Yes, under root कर दीजिए. That under root will be, so here value is coming 64, sum is coming 64, under root of that standard deviation is 8. अब स्क्वायर कर दिया तो पॉजिटिव कहाँ से सर? 64 का अंडर रूट लिया, 64 का अंडर रूट लिया, प्लस माइनस 8 आया. हम प्लस माइनस सेट करेंगे ही नहीं ना सर, हम तो डायरेक्टली कर देंगे. हम तो उतना मैथमेटिक्स तो अप्लाई नहीं कर रहे, हम तो अप्लाई कर रहे हैं इकोनॉमिक्स. माइनस का मतलब नहीं है. नहीं, बिल्कुल नहीं सर. माइनस हमारे लिए सिर्फ साइन है, डायरेक्शन है, नो मैथमेटिकल नोटेशंस. ओके, सो 64 का स्क्वायर रूट सिर्फ पॉजिटिव लेंगे आप, राइट? So this is what now it is going to be under root 8, deviation is 8. अगर सिर्फ अल्फा लिमिटेड का होगा, MCQ में होगा, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, आंसर मालूम होगा 9% 8. रिटर्न और रिस्क दोनों निकल गया. क्लियर? नीचे कुछ और भी हो सकता है, 9,64 भी हो सकता है, कुछ और भी 9 को भी डिवाइड कर देंगे 5 से कुछ करके. जो जो पॉसिबल ब्लंडर स्टूडेंट कर सकते हैं उस सब पॉसिबल ब्लंडर को कैलकुलेट करके उसके अकॉर्डिंगली आंसर निकालेंगे, ताकि हर कोई कैलकुलेट करे अपने ब्लंडर के पास, तो उसको एटलीस्ट चॉइस तो मिले. ब्लंडर के साथ चॉइस मिलना जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज, so once you have got that return and risk available to you, now second is beta. Same way calculation. Beta is having a calculation. Now how calculation is going to work? Same thing. Yes. बैक करूं, लास्ट वाला कैलकुलेशन बता दूं. ये जो फर्स्ट कॉलम इज प्रोबेबिलिटी, सेकेंड कॉलम इज रिटर्न परसेंटेज ऑफ अल्फा लिमिटेड,
that is already given to you. Mean we have already calculated. Mean calculation is there, which is probability multiplied by individual return, summation of that. This is what we call it summation PIXI. I is equal to 1 to n. That's the way we calculate. Then next to that, once it has been done, next to that is going to be the deviation, mean deviation. Mean deviation means it is observation minus mean, like -5 -9, 5 -9, 10 -9 and so on. That is what R minus R mean. And last to that is R minus R mean square, means this your third column square multiplied by probability, like -14 into -14, that is a square of -14 into probability 0.15, you will get that value, which is already written in the column head. Okay? You can, if it is not clear, you can see there also. This is the way it has been calculated. The same calculation has been repeated for beta. It has been repeated for beta. Now you think of, anyway calculation is going to take more time, but I'll request you to must have at least cross check some of the calculation, really it is coming or not. Actual learning will be possible only when you will calculate on your own. Observations had been there. You know 10.7 is going to be mean return. 10.7, now you will take it here, mean minus mean, observation minus mean return, and you will get the figure. Like here 5.3 has come in the first case. 5.3 square means 5.3 into 5.3 and then multiplied by probability. So probability has been assigned. Clear? Normally what happens, this is to on the classroom, very small simpler example. In real life a good number of probability list is there. Even they use random number generators, simulators they generate, so many things they do, various probabilities can be assigned, and that's why it is the software which we apply for all those, and we call it predictive model. All predictions has to be made, how prediction is going to be there, which is your data modeling paper must be taking, an application is coming here. आप वहाँ सीखो, यहाँ apply करो. That's the way it is. Various predictive models. You must have done one of the predictive very strongly used called regression model. Have you done regression? Very important regression model is there. Subject to that, correlation should be existing. Then only regression will be there. Y should be function of x. If it is not function of x, there can't be use of any regression there. So first you have to check it, cross check it. So somewhere you have to be very careful. Okay. In finance, I have seen number of times people apply blindly without knowing whether it should be applied or not. They know that and they apply. Now how it is going to get applied? Listen very carefully. So these all calculations have been made, and you will find out how much is standard deviation coming. How much is standard deviation? 3.26. Comfortably calculated for you. Anyway, don't believe on my calculation. Sometimes deliberately I leave one or two problem, somewhere deliberate mistake, just to cross check how much sincerely you are looking into it. And those who find out get rewarded. तो कभी कभी ऐसा हो, इसमें भी हो सकता है एक आध कैलकुलेशन गलत हो. कहाँ गलत है मैं भी भूल जाता हूँ, पता नहीं है, तो आप पॉइंट आउट करना जहाँ गलत होगा. In the case of alpha, 9.2, मतलब कौन सा 9.2? मीन रिटर्न 9 कितना हो रहा है? नहीं,
यहाँ गलती नहीं है। अब ऐसा मैंने बोल दिया तो आप हर कदम पे मुझे गलत पकड़ोगे, ऐसा नहीं होता है। इतना भी गलत नहीं करके आया हूं मैं। थोड़ा आपको मौका क्या दिया, तो मुझे तुरंत पकड़ रहे हो। इट्स नॉट डियर, इट्स 9। Anyway, let's move ahead. And to be more frank, I'm less bothered whether it is 9 or 9.1 or 9.2. Ultimately, how it has to be calculated, you have to make that. Change the probability, you will get a different figure altogether. Clear? That's for me, timing in the classroom process is more important. Method of calculation is more important rather than figure. But यहाँ गलती नहीं है, मान के चलो, थोड़ा आप धैर्य रखो, चलो। Next is 10.70. Now I was saying that मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में, मतलब फिगर को ड्रॉप करने में, फिगर को लिखने में केयरलेसनेस रहा, अदरवाइज मैं कन्फ्लिक्टिंग रिजल्ट देता आपको। आपने वहाँ क्लियर कट किसको चूज किया था? बीटा को चूज किया था। एक्चुअली होता क्या है, मेन जब भी आप रिटर्न और रिस्क की बात करेंगे, यू हैव टू कैलकुलेट रिटर्न अपॉन रिस्क। तो पहला वाला अल्फा का रिटर्न कितना है? 9, और रिस्क कितना निकला था? 8। 3.27 आ रहा है। नहीं, वो तो खैर ठीक है, दैट्स अ राउंडिंग वन। ऐसा 10.61 उसको आपने कर दिया, वहां भी राउंड ऑफ हुआ होगा, राइट। तो 3.26 इंपॉर्टेंट क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंपॉर्टेंट यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फिगर आपका 10.70 है, 10.70 डिवाइडेड बाय 3.26, रिटर्न अपॉन रिस्क रेशियो आराम से 3 से ज्यादा है, 3.28, और अल्फा के केस में 1.12। कहीं कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या होता है, जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, आपने सपोज कीजिए अल्फा का रिटर्न आ गया, अभी एज्यूम कर लेते हैं, एक नया फिगर ले लेते हैं, लेट्स मीन रिटर्न ऑफ अल्फा इज 15। इज इट क्लियर? आई एम रीडूइंग दिस क्वेश्चन। फिगर को मैंने अल्फा का ऐसे चेंज किया कि मीन रिटर्न, सपोज कीजिए जो आगे का जो रिटर्न है 15 की जगह 20 कर दिया, 20 की जगह 25 कर दिया, 25 की जगह 30 कर दिया, तो फिगर क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? 15%। अगर मान लीजिए 9 की जगह 15 हो जाता रिटर्न इसका, और बीटा का रिटर्न मैं यहां ले रहा हूं आपको, बीटा का रिटर्न इसी तरह 10.7 या 11 रह जाता। क्लियर? 15 मीन रिटर्न बन जाता अल्फा का, 10.7 मीन रिटर्न होता बीटा का, तब आपका आंसर क्या बनता? सिर्फ मीन के बेसिस पे अल्फा शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यस और नॉट? और तब मैं कहता होल्ड ऑन, लेट्स मूव अहेड, और तब उसके बाद आप रिस्क निकालते, और रिस्क निकालने के बाद अगर इसका 8 आता और इसका 3.26 आता, तो 15/8 कितना बनता? लेस देन 2। और दूसरा क्या होता? 3 पॉइंट थिंग्स, आपका आंसर चेंज कर जाता, अल्फा से शिफ्ट करता बीटा की तरफ। इसीलिए मैंने कहा कि उसी समय मैंने कहा आपको कि मैंने बड़ा इजी वॉक थ्रू दे दिया आपको, डिसीजन में कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। सर ये क्वेश्चन में ऐसे आ सकता है कि ये प्रोबेबिलिटी पहले भैया तो चेक इट कि सब 1 है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चेक करना चाहिए। और आपके पास टाइम बिंग ये ऑप्शन नहीं है कि प्रोबेबिलिटी को, बचे हुए प्रोबेबिलिटी को, रेजिडुअल प्रोबेबिलिटी को आप काउंट करें उस तरीके से। तो होता क्या है कि दैट कुड बी अ फ्लॉ ऑफ क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी सम हैज टू बी 1, राइट? दैट कुड बी फ्लॉ ऑफ पेपर। उसमें क्या होता है, फिर आपके पास यू कैन मेक ए अनदर एजम्पशन एंड यू कैन डिसाइड, या तो उसी प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ऐसा भी आ सकता है कि एक केस में प्रोबेबिलिटी ना दे, बाकी 5 का दे दिया, एक ना दिया, तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। प्रोबेबिलिटी आई एम नॉट असाइनिंग टू द कंपनी,
probability I am assigning to economic happenings. Economic happenings will not be function of company's happenings. Rather, company's happenings will be function of economy's happening. So company has to perform as per economy. Is it clear? That's a one-way relationship is there. Next is. मेरा एक एग्जांपल है हमारे यहाँ 6 वैल्यूज है 6 वैल्यूज आपने दी हुई है प्रोबेबिलिटी यदि कोई 2 वैल्यूज लेके if आपको कैलकुलेशन टेक्निक समझा दें तो ज़्यादा बेनिफिट मैं सर कैलकुलेशन तो 5-6 वैल्यू लेके समझा रहा हूँ. नहीं आप क्या करूँ, इसी को फिर बोर्ड पे लिखो, इसी चीज को. 2 वैल्यू लेके बता दो ना किस 2 वैल्यू को ले, बताइए, आप बताइए. पहली और दूसरी से तो हाँ, कौन सा कैलकुलेशन में दिक्कत है? मैंने तो कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करके लिख के दिखाया है सर. इसी को मैं कहिए तो बोर्ड पे लिखता हूँ. मैं तो कोई भी वैल्यू उठा लूंगा बोर्ड पे. कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो बताइए ना. सब कैलकुलेशन ही तो दिखा रहा हूँ, जस्ट टाइम बचाने के लिए. अगर किसी में भी कोई दिक्कत हो, जैसे आपने 0.5 प्रोबेबिलिटी ले लिया, यूज कर लिया, आप कर लीजिए, 0.5 डाल दीजिए, जो रिटर्न आपको सोचना है रिटर्न डालिए, उसको मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे. इट्स अ वेरी बेसिक कैलकुलेशन. आई कांट पुट मोर टाइम ऑन दैट, राइट. और ऐसे भी आपके डायरेक्ट सिलेबस में ना है तो इसको मैं बहुत जल्दी निकालना चाह रहा हूं. डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है ये आपका. सिलेबस में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा. ओके, ये बाद में पढ़ना है, 3rd सेमेस्टर में पढ़ना है इसको. Is it fine? Let's relate it to that is called market index. Market index also has been the same way. Calculation methodology. Anyone has got any problem in the calculation, please let me know. So this is what you have to have it. Probability 5 ho, 4 ho. Sum of probability has to be 1. That you have to cross check. कि सम जो प्रोबेबिलिटी का होगा 1 होना है. अगर 1 नहीं है सम प्रोबेबिलिटी तो इसका मतलब कहीं मिस्टेक होगा. इज इट क्लियर? या लैंग्वेज अगर लिखा हुआ है तो हो सकता है कि रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी वेरी बुलिश मार्केट. तो अब रेस्ट आपको निकालना होगा. मतलब 0.85 तक की प्रोबेबिलिटी दे दी गई है और आपको बचा हुआ 0.15 की प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज में डाल दिया गया है. ये सब जस्ट थोड़ा सा स्टूडेंट को अलर्ट करने के लिए, एग्जामिनी को अलर्ट करने के लिए दिया जाता है, राइट. ये कैलकुलेशन आया. हाउ मच इज द मार्केट इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न? 10.05%. एंड हाउ मच इज द मार्केट रिस्क? स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.3. 4.3 is going to be standard deviation. Now you look minutely, method is same. And this is the method you have to use for your return calculation. So at least from here now onward, you can say that yes, you know how to calculate return from the expected given figures, as well as risk, how to calculate a standard deviation. There is no other method to calculate a standard deviation from the given observations. आप टूल यूज कर सकते हो. जब आपके फिगर्स लिखे हुए हैं, एक्सेल सीट में डाल दो, वहां निकालो, इक्वल करो, फॉर्मूला लगाओ, STDV लगाओ, वो कैलकुलेट करके आपको देगा. वो करता यही काम है, आपको एक स्ट्रोक में आपको आंसर दे रहा है. बट दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट. सो फर्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू मस्ट हैव दैट यू नो हाउ टू कैलकुलेट मीन रिटर्न, you know how to calculate standard deviation. Now not only that, you can take this secondary market investment decision that should be depending upon return upon risk of the different instruments. और यहाँ पे फिलहाल आपको बीटा is the better instrument which is giving you 3 times per unit return, per unit of risk 3 times return दे रहा है. 3 से ज़्यादा वैल्यू आया था ना, जबकि उसमें आपको 2 times भी नहीं दे रहा है, 1 point something दे रहा है, 9/8, 1.1. क्लियर? तो ये क्लियर कट विनर है आपका. सर इसके अंदर आपने रिटर्न जो पॉजिटिव लिया, रिटर्न नेगेटिव भी तो हो सकता है. तो लिया तो नेगेटिव सर. ये देखिए पहला रिटर्न ही अल्फा का नेगेटिव है, -5 है. मैंने ले लिया. सारा नेगेटिव लेना है, सारा नेगेटिव ले लीजिए, मैं उस कंपनी को झांकूंगा ही नहीं. जो कंपनी नेगेटिव रिटर्न देगा वो मिलेगा. 10 रुपए का शेयर 2 रुपए में बिक रहा होगा, कोई खरीदने वाला नहीं होगा. माइनस. आगे बढ़े. यस, अब एक में इन्वेस्ट नहीं करते.
किस में इन्वेस्ट करेंगे? पोर्टफोलियो बनाते हैं, पोर्टफोलियो बना के देखते हैं क्या करते हैं. व्हाट इज पोर्टफोलियो? Various instruments. Don't put all the eggs in single basket. Okay? Markovi's principles. Actually, again, back to your one of the half segment of your entire syllabus of security analysis and portfolio management. Entire mutual fund industry and asset management companies keep on doing the same thing. मेरे पास अल्फा और बीटा दोनों हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि पोर्टफोलियो का क्या फायदा है? How it is going to calculate? So portfolio has got two things. First one is that putting into two or more instruments, more than two instruments you are putting with. That is first. Second, it is not only when you put into two instruments that is going to have the average return and average risk. Return is mere a mean return, average of the two, whereas risk is, it is actually the relationship between the two, and that is what relationship it is called covariance. अभी तक किसकी बात कर रहे थे? वेरिएंस की बात कर रहे थे. अब हम किसकी बात करेंगे? कोवेरिएंस की बात करेंगे. कोवेरिएंस इज इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले आप यहां कुछ भी परसेंटेज ले सकते हो. मैंने इन्वेस्ट इक्वल इन अल्फा एंड बीटा कहा. आप चाहें तो कह सकते हैं मैं 80% बीटा में डालूंगा, 20% अल्फा में डालूंगा. यू कैन मेक दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इज इट क्लियर? यू कैन ईजिली मेक इट. जिस भी परसेंटेज में डालेंगे दैट इज बिकमिंग वेट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट. 3 इंस्ट्रूमेंट होगा, अल्फा बीटा गामा 3 कंपनी में डाल रहे हो, then in that case you can decide about 30 30 40 40 30 70 and then another 30. कुछ भी कर सकते हैं. 40 40 20 कर दो. ये आपकी मर्जी है, आप कैसे डिसाइड करते हैं और आपकी मर्जी कैसे बनती है उसके लिए पढ़ते हैं. For calculation there is no difference. Now how to look upon this entire calculation? I hope in the last also people are looking at carefully. 50-50 we have done. 50% of your money will go to Alpha Limited, 50% will go to Beta Limited. So your return will be coming, that is 50%, 0.5 into return from Alpha plus 0.5 into return from Beta, and that is going to give you, so what is your average return? 9.85% return is there. अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो रिस्क है वो रिस्क बहुत रिड्यूस हो जाए. रिस्क रिड्यूस हो जाए. और पोर्टफोलियो में इतना रिस्क रिड्यूस हो सकता है कि एक का रिटर्न अगर 10% है, दूसरे का रिटर्न 15% है, तो 10% और 15% इवन इफ यू इन्वेस्ट इक्वली you will get an average return of 12.5%. 10 वाले का रिस्क अगर 4 स्टैंडर्ड डेविएशन है, 15 वाले का रिस्क अगर 7 या 8 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो वहां मैं चाहता हूं कि उसका रिस्क घट के 2 से नीचे हो जाए. आंसर हो सकता है. कैसे हो सकता है? तो इसके लिए हमें एक्चुअली पोर्टफोलियो सेलेक्ट करना पड़ेगा. कैसे सिलेक्शन वर्क करता है? तो आप यहां देखिएगा, द वे इट हैज बीन पुट, द रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो is going to get calculated by using the formula which is W1 square sigma 1 square. Sigma 1 I am using means first instrument, and what I am using, W1 means weight of first instrument. So weight is what percentage of investment into that. If you are investing 10% into first instrument, it is 0.1 square. Okay, here we are investing 0.5, that is 50%, 0.5 square. It is handwritten. Instead of searching for the formula and applying, I thought it's better to write
0.5 square, that's a W1 square, sigma 1 square, plus W2 square, sigma 2 square, plus 2 W1, W2, sigma 1, 2. Understand, it is not sigma 1 into sigma 2. Be very careful. This is the only point I'll tell you. This is sigma alpha beta I have written, sigma 1, 2. What is sigma 1, 2? Sigma 1 is a standard deviation of 1, or sigma alpha is a standard deviation of alpha, which we have calculated, which had come standard deviation 8. Sigma beta is again we had calculated, but this is sigma alpha beta, which is nothing but covariance between alpha and beta. What is sigma alpha beta? It is covariance. It is not that sigma square is there. So what is covariance? And I think you have already done, first semester is through, a lot of statistics you have done. Sigma xy Variance of x, sigma xy is what is the variance of x and variance of y? relationship between two variance or two deviation, not variance. Is it clear? Now it is very important here how it is going to get applied. सर ये फार्मूला कंबाइंड डेविएशन से रिलेटेड है क्या? ये वाला कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड है? हाँ, वही है। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला की तरह काम करता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर किए होंगे ना, जिस तरह से ये फार्मूला जो आपने डिराइव किया हुआ है ये वाला, ये हमें याद करना पड़ेगा ऐसा। थोड़ा याद रख लीजिए। ओके, क्या इश्यू है यहाँ पे? यहाँ पे इश्यू है कि आपको कोवेरियंस निकालना है। देखिए, व्हाट इज वेरियंस? I'm now not explaining variance from a statistical point of view, mathematical point of view. I'm explaining it from practical point of view. स्क्वायर बोलोगे, डेविएशन का स्क्वायर बोलोगे तो फिर वही मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया। मैंने पहले ही कहा कि मुझे मैथमेटिक्स से नहीं करना है, मुझे तो प्रैक्टिकली इकोनॉमिक एप्लीकेशन से करना है। मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, कैसे होगा, कैसे काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट इज यस लाउडर ओके, वेरिएबल्स एंड मीन वेरिएबल्स। तो पहला वेरिएबल कौन सा था? मीन वेरिएबल नहीं था। आप स्क्वायर कर रहे हो तो स्क्वायर करने में पहले और दूसरे टर्म में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं ना। Yes, actually I'm sure the point which I want to highlight, still the essence of that point yet has not reached to you. That's why you might not be knowing what exactly I'm going to discuss in the mathematics. Philosophically, when you vary yourself against yourself, varying against self is called variance. I am repeating, varying against self is called variance, varying against others is called covariance. As I said, I am not going to have a mathematical relation now. I am going to have an economic relationship. अपने आप से जब वैरी करवाते हो तो वेरिएंस होता है, और अपने आप से वैरी करवाते हो तो अपने आप को ही अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। और जब दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो कोवेरिएंस कहलाता है। मेरा मेरे साथ कंपैरिजन वेरिएंस होगा, मेरा आपके साथ कंपैरिजन कोवेरिएंस होगा। इज इट क्लियर? कोवेरिएंस के लिए दो की उपस्थिति है, वेरिएंस अकेले आप अपने आप में हो जाता है। यही इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है। अल्फा का वेरिएंस निकालने के लिए मुझे अल्फा के अलावा बीटा की जरूरत नहीं थी। यस और नो? बीटा का वेरिएंस निकालने के लिए बीटा के अलावा मुझे अल्फा की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही मुझे अब कोवेरिएंस चाहिए, को वर्ड यूज करते ही मुझे लग गया कि दो चाहिए। अब
जब तक 2 नहीं होगा तब तक को वैरी नहीं कर सकता, राइट? इसका मतलब हो गया कोवेरियंस हर हाल में रिलेटिव बनेगा। कोवेरियंस क्या बनेगा? रिलेटिव बनेगा, और वेरियंस एब्सोल्यूट बनेगा। एक और रिलेटिव मेजर है जिसमें स्टैंडर्ड एक को मान लेते हैं हम, जिसको एक को मेजर करते हैं। कभी भी कोई मेजरमेंट आज तक बिना कंपैरिजन का नहीं हुआ है। एक तरफ आप बटखरा रखते हो, दूसरी तरफ सामान रखते हो, तौल देते हो। बटखरा नहीं रखोगे, तौल नहीं मिलेगा। एक तरफ आप गॉज रखते हो, मीटर रखते हो, नाप देते हो। आप जब तक नहीं रखोगे तब तक मेजर नहीं हो सकता वो। और उसी को फिर आप पूरा का पूरा मेजरमेंट फिलॉसफी ही इसी पे है। यही मैं अब रिस्क के मेजरमेंट फिलॉसफी की बात कर रहा था कि अपनी डेविएशन को, अपने वेरिएंस को, अपने कह सकते हैं कि जितना मूवमेंट्स है उसको आप मेजर कैसे कर रहे हो, अपने आप से मेजर कर रहे हो, वेरिएंस हो गया। और अगर किसी और के साथ मेजर कर रहे हो तो कोवेरियंस हो गया। किसी के साथ भी मेजर कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल, टाइम कम है फिर भी जरूर कोट करता हूं। मुझे कभी कभी लगता है जैसे कुछ पेरेंट्स अपने छोटे बच्चे के साथ, यंग पेरेंट्स आते हैं, बच्चा बड़ा शरारती नज़र आता है, और शरारती नज़र आने के बाद भी पेरेंट कहते हैं कि ये जो बच्चा, ये तो छोटा वाला कम शरारती है, बड़ा वाला ज़्यादा शरारती है। और मुझे लगता है कि जब ये छोटा वाला का हाल है तो बड़ा वाले का क्या हाल होगा। वही हाल रिस्क का है। हम अपनी मार्केट की वॉलेटिलिटी की बात करते हैं, अब क्वेश्चन उठता है कि वॉलेटिलिटी तो कहीं भी होगा ना, किसी और की वॉलेटिलिटी भी होगी, तो और का क्या हाल हो रहा होगा। वी विल मेजर। और वो जो थर्ड मेजर है जो मार्केट के एक स्टैंडर्ड मेजर के साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बीटा। हैव यू हर्ड बीटा मेजर? बीटा इज द रिलेटिव मेजर ऑफ रिस्क, विच इज कोवेरियंस अपॉन वेरियंस। बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, विच इज नथिंग बट स्लोप डेल वाई अपॉन डेल एक्स। ओके, एनीवे दीज थिंग्स विल कम। अभी तो हमने फाइनेंस को अनफोल्ड करना शुरू किया है, राइट? यस, And we know that return risk ratio of beta is very good than alpha. Why are not we putting everything into beta? Why are we you can, that is your choice. Now I'm moving ahead of that. That you can do it. Yes. No one stop it. making portfolio doesn't make sense in this case? Oh, it is not. Try to make that. I'm just using those figures. But there may be some other parameters. Yes. Is it clear? So if suppose you are putting into two places, look into that. How much was your beta's risk? Understand? How much was there? 3126. Excuse me, please. ये मैंने कहा ना कि ये आपके इन्वेस्टमेंट वाले पे आएगा। अब मैं कहता हूँ कि मैं इन्वेस्टर हूँ, आई एम नॉट अ स्पेकुलेटर, and I am very conservative investor. I am more concerned with the risk rather than return. I don't mind it return coming low. I am more concerned with can it be possible. Suppose 3.26 है, आपने कहा, सही कहा कि बीटा है, लेकिन मैं एक ऐसा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, अभी गांव से उठ के आया हूँ, पैसे को ऐसे पकड़ के चलने वाला हूँ, 2 घंटे में 5 बार चेक करता हूँ पैसा है ना पॉकेट में, मैं ऐसा इन्वेस्टर हूँ। और आपने मुझे ज़बरदस्ती कहा, मैंने कहा देखो साहब ऐसा है कि मैं 2.5 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, आप कैलकुलेशन में 3.26 हैं, अब बता दो मैं क्या, मैं 2.5 से ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता, कैन यू टेल मी दैट इट इज़ अ फिट फॉर मी? No, there is no big compromise on the return. You can have the ratio, return risk ratio you can indicate, but my concern is not return, my concern is risk. I am a risk centric investor. Can you change my behavior? And at least in the first step itself. And आपको अपना बिजनेस भी करना है, आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनने जा रहे हैं, तो मेरे लिए तो प्रोडक्ट बनाओगे ना आप, नहीं बनाओगे? दैट इज सब्जेक्ट इज देयर, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसीलिए मैं भी सिर्फ कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, सबके लॉजिक हैं। और देखियो अब 3.26 से मेरा रिस्क घट के कहाँ चला आया, फुलफिल कर दिया ना सर। आप 2.5 से ज़्यादा नहीं चाहते हो, लीजिए 2.5 से कम हो गया रिस्क, और रिटर्न भी ज़्यादा नहीं घटा है, 10.7 से घटा के 10.85 भी तो किया आपने। एंड एनीवे रिटर्न हैड नॉट बीन माय प्रायोरिटी। क्लियर? कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो बेहिचक पूछिए, जवाब देना मेरे हाथ में। ओके, प्लीज नेक्स्ट वन।
अब ये कोवेरियंस कैसे निकलेगा? So what is I mentioned to you? It's a varying with yourself is variance, varying with others is covariance. अब मैंने अल्फा और बीटा के बीच में वैरी करवाना है. कैसे करवाएंगे? See the calculation. I have picked the figure from the past, whatever it is there, easy for calculation. Look into that how the calculation is going to work. कौन सा किस में? लास्ट कॉलम पहला अल्फा है, दूसरा बीटा है, इसीलिए मैंने नीचे कॉलम का नंबर भी कर दिया यहाँ पे आके. फर्स्ट कॉलम इज प्रोबेबिलिटी, सेकंड कॉलम इज रिटर्न ऑफ अल्फा, थर्ड कॉलम इज रिटर्न ऑन बीटा, फोर्थ कॉलम इज मीन डेविएशन, फिफ्थ कॉलम इज मीन डेविएशन फॉर बीटा, सिक्स्थ कॉलम इज दैट 4 into 5 into 1. Everything explicitly written. Ready to eat है डियर, कोई कुकिंग की जरूरत नहीं है इसमें. Is it fine now? Now interestingly you will find out here very one unique part which I have done. Now please, I will be putting you some questions, not answering them. For those answers I'll suggest you wait for next semester. Subject to that you go for security analysis. Then only those answers will be available to you. But certainly at least question you should be aware of how the things are working. See column number 1 probability continued, column number 2 and column number 3 you all know these are the part of questions. Column number 4 which is deviation. अंतर इतना ही है कि मैंने वो कैलकुलेशन जो था वो कैलकुलेशन न करके अब सीधा आंसर दे दिया है. जैसे पहला -14 है अल्फा का, तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो -14 है अल्फा का. ये जो आंसर लिखा हुआ है इसी को मैंने सिंपल मेंशन किया. दूसरे में 5.3 पहला है फिगर डेविएशन, सो यू विल फाइंड आउट हियर आल्सो 5.3 इज द फिगर. यहां आप लोग गौर करके देखिएगा, r minus r mean of alpha when we multiply on itself, that is a square of that was giving us variance. Now we are not multiplying r minus r mean alpha into r minus r mean alpha, rather we are doing r minus r mean alpha into r minus r mean beta. Two different deviations we are going to use, and product of two different deviation and probability of happening of that, multiplying probability will be giving you the figure. Sum of that will give you what? Covariance. So this sum which has come as 25.8 is your covariance. Is it fine? Sir, in case column number 5 यदि वो रिटर्न जो है इस 30 है 20 है, कहाँ किस में? 0.10 जो है प्रोबेबिलिटी उसके साथ 0.10 प्रोबेबिलिटी के साथ -4.70 है सर. नहीं सेकंड में फर्स्ट कॉलम इसके बाद सेट वाला कॉलम 20 है. हाँ 20 है. रिपीटिंग 15. हाँ 15. हाँ हाँ. Then How will do miss? I didn't get your point. ये सम जो 100% होना चाहिए ना, यदि 15 आ गया सपोज और टोटल आ गया 95 परसेंटेज, देन कोई आप चेंज एंड देन प्रॉब्लम. मतलब आप कुछ मिस कर रहे हैं. क्या बताइए. जैसे देखिए, एक्सक्यूज मी, आप प्रोबेबिलिटी कॉलम की बात कर रहे हैं? नहीं सेकंड जो रिटर्न निकलना रिटर्न परसेंटेज लिखा हुआ है, इसका टोटल नीचे सम 100 है. नहीं परसेंटेज क्या है? नहीं 100 नहीं है सर. अच्छा ऐसे ही आप ये तो रैंडम है. रैंडम है. हाँ रैंडम है. जैसे एक चीज बताते हैं, एक्सक्यूज मी प्लीज.
maybe his question is very valid for you also. Excuse me, understanding the nature and behavior of data is very important. अदरवाइज वो फिर आपको रोट लर्निंग के लिए कंपेल हो जाएंगे. रोट लर्निंग ना करें, समझिए क्वेश्चन को पहले. क्या है यहाँ पे? इन्होंने कहा कि ये जो मैंने तो देखा भी नहीं है कितना है टोटल, ऐड करें तो कितना आता है? 70 आ रहा है 70 आ रहा है. कुछ भी आ सकता है. अच्छा ऐसे बोलते हैं, सपोज कीजिए आपको एग्जांपल में लूँ या किसी और, कोई दिक्कत तो नहीं? सर कॉर्पोरेट फाइनेंस में कितना मार्क्स आएगा आपको? जितना आप देंगे नहीं, जितना आप लेंगे आपकी कॉपी पे कितना मार्क्स आएगा? 100 में बोलिए, आउट ऑफ 100 इंक्लूडिंग इंटरनल्स, जस्ट फॉर सेक ऑफ टॉक 70 आएगा. Just a minute, listen, very important, it is just deliberately you can attach yourself with the marks, that's why I have taken this example, but it is related to market or any performance, any business it could be there. 70 आएगा आपको मार्क्स. आर यू 100% श्योर? मेरा सेकंड क्वेश्चन है, आर यू 100% श्योर 70 मार्क्स आएगा? 100% मतलब 69 नहीं आएगा, 71 नहीं आएगा? नहीं 70 मिनिमम आएगा. नहीं तो सर तो पूरा का पूरा आपने फील्ड आगे छोड़ दिया ना, तो आप तो 1 टिल टेस्ट पे चले गए. मुझे तो एक फिगर चाहिए. मुझे no one say, but you try to say, because without saying you can't have your expected return, you can't have your expected marks. नहीं सर, मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि सपोज ये टोटल 95 है. कहाँ टोटल? कौन सा 95 है? रिटर्न जो है टोटल जो है 95 आ रहा है. नहीं सर, -5 कैंसिल हो जाएगा. सर एक मिनट, टोटल मैंने कहता -5 कैंसिल करके 95 आया टोटल नीचे. आई हैव टू कन्वर्ट इनटू सर 70 आ रहा है सर. नहीं नहीं मेरे को ये क्वेश्चन ये वो डिटेल्स विजिबल नहीं है, मतलब एक ऐसे एग्जांपल है. नीचे 70 आ रहा है टोटल. वो 70 आए नहीं, दैट इज नॉट रेलिवेंट. वी आर नॉट एडिंग इट, दीज आर द चांसेस. अगर मैं कहता हूं देखिए अब सर आप जो क्या ऐड करने चाह रहे हैं वो गलती क्या हो रही है. इट इज, अगर आपको मैंने कहा कि आपने 70 मार्क्स कहा आउट ऑफ 100, इसलिए आपने परसेंटेज वर्ड यूज किया. मैं कहता हूं देयर इज ए 80% चांसेस यू विल गेट 70 मार्क्स. लिसन, व्हाट इज दैट? 80% chances you will get 70 marks. There is a 10% chances you will get 75 marks. There is another 10% chances you will get 80 marks. Now इसका मतलब ये नहीं होता है कि 70 + 75 + 80 आपका मार्क्स आएगा. No, it's not that. मेरा मतलब है ये जो सेकंड कॉलम के अंदर रिटर्न है, आप इसको रुपीस में कन्वर्ट करिए, परसेंटेज में इन प्लेस ऑफ परसेंटेज रुपीस में कन्वर्ट करिए, देन व्हाट इज द रिटर्न कभी भी रुपीज में नहीं आता है. रिटर्न वर्ड ही परसेंटेज वर्ड है. ये सब चीजें बहुत केयरफुली आपको चलना होगा. रिटर्न इज ऑलवेज परसेंटेज, कॉस्ट इज ऑलवेज परसेंटेज, कॉस्ट इज नेवर एवर रुपीज, कॉस्ट इज नेवर एवर रुपीज. ओके, तो थोड़ा सा मेरा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे 10% लिखा है, 10% है और 70. नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट. इट इज ए चांसेस ऑफ 10%. लुक इनटू रोज, नॉट लुक इनटू कॉलम्स. रोज के हिसाब से चलें. प्रोबेबिलिटी का सम करके चेक कर लीजिए कि वो 1 होना चाहिए. क्लियर? प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे, न कि आप इस कॉलम का सम करेंगे. फिर दूसरा क्वेश्चन उठता है कि आपने बोला कि नेगेटिविटी इग्नोर कर देना. जब आपने -5% लिया था तो 5% है नो. जब आप ऑपरेशन के लेवल पे जाएंगे, नेगेटिव इग्नोर करने के लिए ही आपने स्क्वायर किया था. जैसे देखिए यहां पे, एक्सक्यूज मी, आप यहां गौर करके देखिए, -5 है अल्फा का, -5 -9 ऑब्जर्वेशन माइनस रिटर्न, मीन रिटर्न 9 है, मीन रिटर्न 9 है, और -5 -9 किया, दैट इज मेकिंग -14. अब -14 को इग्नोर, माइनस को इग्नोर करने के लिए हमने क्या किया? -14 का स्क्वायर किया, और -14 का स्क्वायर करने के बाद हमने जैसे ही माइनस का स्क्वायर किया, सारा फिगर मेरा लास्ट कॉलम में पॉजिटिव आ गया. वी आर नॉट इग्नोरिंग, वी आर ऑपरेटिंग. इग्नोरेंस आप जब कहते हैं कि एब्सोल्यूट फिगर काउंट कर रहे हैं, दैट इज इग्नोरेंस. जब आप 2 डंडी डाल के मोडस यूज करते हैं, दैट इज इग्नोरेंस. यहां तो हम ऑपरेट कर रहे हैं साहब, मैं तो आपको स्क्वायर कर रहा हूं, इग्नोरेंस नहीं है.
there and that is only for the variance. है ना. Hey, what about the mean deviation? You are not going to. I'm not. That's why because of that limitation of mean deviation is not a right measure of a your risk. But still we can make it. मैं उसको भी आपको दिखा सकता हूँ अभी, but unfortunately time is very limited. वहाँ भी मैं आपको तो मैं रेंज से हाईएस्ट फिगर माइनस लोएस्ट फिगर से रिस्क डायरेक्ट निकाल के दिखा दूंगा. कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कैलकुलेशन देखिए कैसे वर्क करता है. नेक्स्ट इज एक मिनट. चार्ज पे लगाना है. हाँ चार्ज पे डालना. लो आप आगे लो. करो. Please, last portion, few minutes more to finish it off. These calculations which has been made, what we require to remember this formula. Otherwise, in real life nowadays these formulas are not required. Excel and any software will take care of it. But certainly for examination, for your solving purpose, these formulas are required. What happens? One more change with the formula. If suppose instead of 2 instruments, 3 instruments are there. How 3 instruments are going to get counted? Alpha, beta, gamma. So you will be writing W1 square, sigma 1 square, plus W2 square, sigma 2 square, plus W3 square, sigma 3 square, plus 2 W1 W2 sigma 1 2, plus 2 W1 W3 sigma 1 3, plus 2 W2 W3 sigma 2 3. That's the way equation will move. And you can calculate accordingly. Entire mutual fund industry is based on that. Yes. Little louder. W की value, the percentage of amount which you are investing. So you can start with whatever your amount is there. Suppose you want to invest 100 rupees. So out of 100 rupees, how much you want to invest in alpha, how much you want to invest in beta. If suppose out of 100 rupees you want to invest 60 rupees in beta, so 0.6 will be the value of W. Okay. So total investment in that instrument divided by total instrument will be W. Now, this is the point. I am simply stopping here with the return and risk. Quickly, I am going to capital busting. Yes. वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, 3rd सेमेस्टर. ये बेसिस कैसे सेलेक्ट होता है वो 3rd सेमेस्टर में सेलेक्ट करेंगे आप. Now you got the word return and risk. Whatever we had used the theoretical one. This you got that using the word return. If figure is coming from history, it will be historical return. Figure is coming expected, it is expected return. Actually, I had used the only word called expected return. ये जो आपका पहला टर्म है, इस पहला टर्म का क्या न्यूमेरिकल बैकग्राउंड हो सकता है वो मैंने आपको दिखाया. दैट्स अ मीन रिटर्न दिखाया. और दूसरा इससे रिलेटेड रिस्क क्या हो सकता है वो रिस्क मैंने आपको दिखाया. जो यहाँ थ्योरी है उसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव मैंने आप लोगों को अभी विजुअलाइज करवाया. नाउ कम टू द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाउ इट इज गोइंग टू वर्क. माय यूनिट 2 स्टार्ट्स नाउ, कॉल कैपिटल बजटिंग. इन द कैपिटल बजटिंग, two things are there. First one is
capital word, another is budgeting word. Budgeting is before happenings. Budgeting is before happenings, whereas reporting is after happenings. Power is not there. नहीं आ रहा, छोड़. Just focus on me. So before happenings and after happenings, capital budgeting means how capital you will be allocating, how you will be deciding that how much capital you have to put with. So an investment is going to come, and that investment is supposed to be invested or not, that decision has to be well before investment. After investment, return could be anything. So what we were talking about, expected return, required return, two things were there. Required return should be less than equal to expected return, or you can say expected return should be more than equal to required return. So now expected return calculation we had seen. Required return come from our cost of financing or our desirability, whatever our desirable return is there, that we start to make calculation. Now how it works, two things are there, how it is going to work. First one is that, first important aspect which we are going to talk about is, whenever this required rate of return we consider, these calculations has got three perspectives. Perspective number one, at what cost of financings you are getting the money. Second number, where you are parking the money and what is the return it is going to be there. Now when you are parking the money return will come in future. What is the biggest challenge in the finance, which I had mentioned in the first session itself? That biggest challenge is you have to invest now, but your return will come in future. You are not going to get the return. So your decision has to be based on what you are going to expect from that. So expected cash flow has to be decided. So now two conditions will be there. There will be zero period, and recall the calculation which we had used in the terms of first zero period, 1 year, 2 year, 3 year, 1 period, 2 period, 3 period, 4 period, 5 period, it could be n periods. N periods it can apply. Now, whenever we are taking this n period investment decisions, should we invest or not, only one economic rationale, our cost of financing, whatever it is there, should be met, should we receive. Cost of financing मिलना चाहिए. अब कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मिलना चाहिए तो कैसे करेंगे. मान लीजिए किसी का कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक सेपरेट चैप्टर है ऑल टुगेदर, इसी सिलेबस में है. नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस दोज थिंग्स. इंडिपेंडेंट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, कॉस्ट कैलकुलेशन. अभी मान लीजिए आपका कॉस्ट जो है वो 12% का कॉस्ट है. 12% इज योर कॉस्ट. व्हेन 12% इज अ कॉस्ट, मीन्स योर इन्वेस्टमेंट शुड हैव 12% ऑफ रिटर्न. लेकिन रिटर्न तो मिल नहीं रहा है, आपको अमाउंट मिल रहा है. व्हाट इज कमिंग इज योर अमाउंट, इट इज नॉट कमिंग एज अ परसेंटेज टर्म. परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट. जबकि रिटर्न मैंने भी क्या बोला, कॉस्ट परसेंटेज टर्म में होगा, रिटर्न परसेंटेज टर्म में होगा. ऑलवेज ध्यान रखिएगा बोलते वक्त. जब कभी इंटरव्यू बोर्ड में इंटरव्यू स्पेशलिस्ट होते हैं और जो सामने फाइनेंस के लिए अगर कोई पोजीशन के लिए आता है, वो कैसा टर्म यूज कर रहा है फाइनेंस का, उसी से पता चल जाता है कि उसको कितना फाइनेंस आता है. अगर किसी के लिए कॉस्ट लाख रुपीस में हो जाता है तो इसका मतलब उसको फाइनेंस नहीं आता है. मैंने एग्जांपल में पहली क्लास में ही बता दिया था आपको. कॉस्ट परसेंटेज होता है, रिटर्न परसेंटेज होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ योर अमाउंट. You may be $1 billion investment company, you can be $1 million investment company. दोनों को कंपेयर कर सकते हो आप, क्योंकि ये परसेंटेज टर्म है. तो आप इसको डिसाइड करते हैं. अब इसमें पहला टर्म क्या यूज करेंगे बताते हैं कि आपको जो अमाउंट है, सपोज करो आपने इनिशियल अमाउंट यूज किया 1000 रुपीज. आप लोग क्विकली नोट कीजिए, एक छोटा कैलकुलेशन फास्टर. 1000 रुपीज ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और आपको रिटर्न मिल रहा है फर्स्ट ईयर के एंड में 400, सेकेंड ईयर के एंड में 500, एंड थर्ड ईयर के एंड में 500, फोर्थ ईयर के एंड में
600. ओके, ये इन्वेस्टमेंट ए है, पहला नंबर इन्वेस्टमेंट। अमाउंट मैं बोल के भूल गया हूं, आप लोग 400, 500, 500, 600 ऐसा कुछ बोला ना, 556, 4556। ओके, दूसरी तरफ दूसरा इन्वेस्टमेंट है जिसमें आपको 1000 उसमें भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज सेम इन जीरो पीरियड। 1000 जब लिखेंगे तो ब्रैकेट में डालेंगे आप, बिकॉज इट इज आउटले, यू आर इन्वेस्टिंग एंड योर रिटर्न इज कमिंग फर्स्ट ईयर 100, सेकेंड ईयर 300, थर्ड ईयर 500 and fourth year 800, fifth year 1200, sixth year 1500, seventh year 2000. Seventh year 2000. This is what your investment is there. Now question is, we have to apply certain criteria and these are mutually exclusive. Whether we should invest in first or we should invest in second. Then keep these two examples right now in your box and let's start concept first. So whenever we are talking about the first principles, first concept says that the investment which return your initial investment fastest should be the choice. This is called payback period. What is the method is called? Payback period method. जो इन्वेस्टमेंट आपको सबसे पहले आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिटर्न कर दे अर्लीस्ट टाइम में, वो आप सेलेक्ट करें। अब दोनों में देखिए आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1000. Who is returning you first? A. So, as per payback period, A is going to be there. Can you quickly calculate what is that payback period of A? कितने साल में कर रहा है, कितना है फर्स्ट ईयर 400, सेकेंड ईयर 500, 900 हो गया, थर्ड ईयर अगेन 500, तब तो आपको 1400 मिल रहा है, आपको तो सिर्फ 1000 बनाना है, तो पेबैक पीरियड चाहिए। यस, यू हैव टू कैलकुलेट 100 वाला जो बच गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इट विल बी 2 पॉइंट सम ईयर्स विल बी कमिंग अप। सो इसका मतलब क्या है कि 400 प्लस 500 कितना हो गया, 900। कितना बच गया रिकवरी, अगले साल कितना मिल रहा है 500, कितने महीने में, 12 महीने में। 100 कितने में मिलेगा, 2.4। 100 कितने में मिलेगा ये आपको निकालना है। अगर 12 महीने में 500 मिल रहा है या 500 मिल रहा है 12 महीने में, तो 100 कितने में मिलेगा, समथिंग भी निकालो ना। वो समथिंग कौन रोकेगा, एक महीने में 44 मिल रहा है, आप सीधा परसेंटेज निकालो। और याद रखना, जो आप अब मंथ किए हैं, जो डेसिमल में आएगा उसको 30 से मल्टीप्लाई करना डियर। गलती मत कर देना उसको कि 100, 2.6 मतलब ऐसा नहीं हो जाता है 0.6। 0.6 का डेज में कन्वर्ट करने के लिए 0.6 क्या है, मंथ है, 30 से मल्टीप्लाई करना। 2.4 मंथ्स, 0.4 मीन्स क्या हो गया, 12 डेज। तो 2 years 2 months 12 days। MCQ आंसर टिक करना है। इज इट क्लियर? इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या हाईलाइट करना चाह रहा था, आप गौर करके देखो, आपका ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन क्लियर कट दिख रहा है कि आप कुछ गलत कर रहे हो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। यस और नो? क्या डिसीजन में ए और बी दोनों को देख रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपके पास सिर्फ 1000 है।
आप पे बैक पीरियड अप्लाई करके क्या गलती कर रहे हो? यू आर नॉट लुकिंग द कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एक्सरसाइज। यस और नॉट? आप इतनी जल्दबाजी में हो कि जो पहले आपको दे दिया, आपको पहले दे दिया किसने? इन्वेस्टमेंट नंबर 1 ने। दूसरे वाले में आप कैलकुलेट कीजिए कितना निकल रहा है पीरियड। 3 years से ज्यादा निकल रहा है। इट इज टेकिंग मोर टाइम, so we will not accept that. But is it really 3 years is, second investment is giving you that much only amount? It is really a bonanza. Yes or not? If you have a patience and you are holding in the investment, then in that case payback period is not a right period. It's not a right method. So payback period, it has got certain merit. Merit is, it is the simplest to calculate, simplest to apply, simplest to understand. Great merit. And these all three merits are demerits also. These are limitations. What limitations is? First limitation in the payback period, it ignores the residual flow. ये वहीं रुक जाता है जहां आपको पेबैक हो जाता है. It ignores. Point number two, it doesn't consider time value of money. अब तो सारा खेल टाइम वैल्यू पे रन करेगा. It doesn't consider time value of money. Am I clear? That is two biggest limitation payback period has got. So how to really improve it? For improval we can do one thing. We can apply at least one aspect. Discounted payback period can be applied. What is discounted payback period? Instead of using, because the biggest limitation which I was mentioning, it is not considering time value of money. Means how much return you had expected? 12%. Any assumption you can make it, 12% return you had expected, but this 12% is not counted here. You are simply 1000 invested, 1000 getting return in 2 years, 2 months of time. तो इसके लिए तो बिजनेस नहीं कर रहे थे ना कि भाई हमने 1000 लगाया, मेरा 1000 वापस कर दो. नहीं, आपको रिटर्न भी चाहिए. तो हाउ दैट रिटर्न विल बी कैलकुलेटेड? सो यूज द डिस्काउंटिंग रेट. सो पहला फिगर क्या था? 400. Discount it at the rate of 12% 1 year. 500 discount at the rate of 12% for 2 periods. और अब ये नहीं पूछेंगे आप लोग कि कैसे कैलकुलेट होगा. अप्लाई कौन सा करेंगे आप? अलग अलग फिगर है तो पीवीआईएफए यूज होगा या पीबीआईएफ यूज होगा? ए नहीं यूज होगा. नहीं, एन्युटी नहीं है. क्यों एन्युटी नहीं है? इक्वल अमाउंट नहीं है. इज इट क्लियर? तो कैलकुलेट कीजिए, देर किस बात की. लेट्स यूज दिस. जल्दी कैलकुलेट कर लीजिए. मार्कर. Fast. 400 by 1.12 plus 500 by 1.12 square plus another 500 by 1.12 to the power 3. 3 से तो काम चल जाएगा, बाद में बात दूसरा करते रहना. The decision normally don't change by changing payback period to discounted payback period. It is only the period extends. Your recovery time will increase. So how much is the amount you are going to have? 400 upon 1.12 क्या हो गया? दूसरा वाला 500 upon 1.12 का स्क्वायर. एंड तीसरा वाला, let's have a look here now.
0 period you had 1000, first 400, second 500, third it is 500, fourth it is 600. 400 will be discounted at the rate of 12%, so which is 400 upon 1.12. This will be discounted at the rate of 12%, so 500 divided by 1.12 to the power 2. Again 500 divided by 1.12 to the power 3 plus 600 divided by 1.12 to the power 4. This is the calculation you have to make. Now when you will make this power 1, 2, 3, 4, your figure will not be 400, rather it will be discounted figure at the rate of 12%, will become less than 400, then less than 500, and so on, and you have to apply payback period concept on this discounted figure to make it discounted payback period. Clear? Can I have the answer now quickly? How much is coming 400 by 1.12? 357. 357.14. Second one? 398. And third one? 355. Now you can apply and you can calculate your period, and easily it can be found that how much is the value. ओके चौथा भी लिखिए, आपको रिकवरी कितनी करनी है 1000. तो आप इसका सम कीजिए, देखिए 1000 कब आ रहा है, किस पीरियड में आ रहा है, और पीरियड कैलकुलेट करना मैंने बताया, ईयर को मंथ में, मंथ को डेज में कैलकुलेट कर देंगे. अगेन पहली तैयारी एमसीक्यू की चल रही है. एमसीक्यू में भरा पड़ा न्यूमेरिकल होगा, नहीं आता है तो 10 मिनट में सॉल्व नहीं होगा, आता है 1 मिनट में सॉल्व होगा. टाइम 2 मिनट देंगे एक क्वेश्चन के लिए. ओके, इज इट क्लियर नाउ? तो 2 मेथड्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. वन इज कॉल्ड नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, which was payback period method. Second is discounting method, and discounting method is called discounted payback period. But again another limitation which had got the payback period, whether it is payback period or discounted payback period, the limitation was that it was not considering the cash flow beyond. For example, second वाला केस देखिए, सेकेंड वाले केस में डेलिबरेटली मैंने बहुत सा अमाउंट डाल दिया है, मार्वेलस अमाउंट है. आगे जाके शुरू में वो 100-200 दे रहा है, लेकिन बाद में पैसे की बरसात कर रहा है ना. तो लेकिन सेकेंड वाला तो आप छोड़ रहे हो पेबैक पीरियड या डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के बेसिस पे भी. तो आप क्या करेंगे, इसके लिए तब यूज करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. अब सारा डिस्काउंटेड मेथड यूज होगा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वायबल हर जगह आप यूज करेंगे, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड. व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? व्हाट इज एनपीवी? इट्स बेसिकली 3 steps are there just to calculation. 3 steps. Step number 1, you have to have these cash flows. So your set of information should be there. How much is your initial outlay, and how much of the cash flows are going to come to you. Initial outlay and cash flows are going to be visible. That's the cash flow component. It can go up to infinity. That's what the valuation will be there. That's the valuation you are going to use. So it can go up to infinity. It can be up to certain specified period. So cash flow is known. If it is not known, compulsorily you have to forecast. You have to forecast. There is no choice. जो पिछला मैं बता रहा था, यहीं पे बताने के लिए मैंने उतना आपको 1.5 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम लिया है आज, कि आपको बिना कैश फ्लो नहीं पता चलेगा कि क्या करना है फोरकास्ट. तो आपको हर हाल में फोरकास्ट करना है, बिजनेस फोरकास्ट करना है, कोई भी प्रोजेक्ट में फोरकास्ट करना है, हर इन्वायरमेंट में यूज होता है जहां कैश फ्लो है. अभी 2 मिनट अभी. अब ये कैश फ्लो बन रहा है,
पहला पॉइंट हो गया, कैश फ्लो डिटरमिन हो गया. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज व्हाट इज गोइंग टू बी योर डिस्काउंटिंग रेट. क्या आप यूज करेंगे? डिस्काउंटिंग रेट. डिस्काउंटिंग रेट कहां से आएगा? सेपरेटली डिस्कस करेंगे. आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, डिस्काउंटिंग रेट अवेलेबल होगा. सो सेकेंड इज डिस्काउंटिंग रेट. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जब भी कंपेयर करते हैं तो सेम टाइम में कंपेयर करते हैं. सेम टाइम मीन्स यू कैलकुलेट पीवी, प्रेजेंट वैल्यू. सारे कैश फ्लो को बैक करके प्रेजेंट में ले आइए. सारे कैश फ्लो को क्या करेंगे? बैक करके प्रेजेंट में लाएंगे. वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा. आपको कैलकुलेट क्या करना है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. प्रेजेंट वैल्यू माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. सो व्हाट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू? एनपीवी क्या हो जाएगा? पीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. पीवी माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट इज कॉल्ड एनपीवी. जैसे ही माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज दैट एनपीवी शुड बी पॉजिटिव और एटलीस्ट जीरो. कितना होना चाहिए? कम से कम जीरो होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए. अगर नेगेटिव एनपीवी है तो आप जो रिटर्न चाह रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे, वो रिटर्न नहीं मिलने वाला है. क्लियर? मोर देन वन हो सकता है. तो उस आउटफ्लो को मान लीजिए आपको कि पहले साल भी आपने इन्वेस्ट किया, शुरू में इन्वेस्ट किया, 2 साल के बाद और इन्वेस्ट करना पड़ गया. बिल्कुल निकालेंगे, तभी तो कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन मुझे एक प्लेटफॉर्म पे चाहिए, एक टाइम पे चाहिए. आप जितनी बार इन्वेस्ट करना है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोजेक्ट के एनवायरनमेंट में क्या होता है, ये जो जीरो लिख रहे हैं ना, दिस जीरो में बी सो मेनी ईयर्स, दैट जीरो में बी सो मेनी ईयर्स. आप स्टार्ट किए प्रोजेक्ट, मालूंगा 3 साल तक तो भी बन ही रहा है. व्हाट इज द फर्स्ट ईयर व्हेन यू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यू? सो दैट फर्स्ट ईयर में फॉल वेरी लेट. मेरा अभी तक का सबसे लाइफ का जो सबसे लॉन्गेस्ट मेरा इवैल्यूएशन है एक्सेल सीट पे, जिसमें कि प्रोजेक्ट जो था वो 7 ईयर्स में कंप्लीट होना था. मतलब 7 ईयर्स जीरो में समाया और 99 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था. तो इसका मतलब इनिशियल जीरो और उसके बाद एक्सेल में 99 ईयर्स मूव कर रहा है. और आप समझ सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स होता है वो, हर एस्पेक्ट पे. और मशीन ऐड हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, बीच में रिप्लेसमेंट हो रहा है, सारे फोरकास्ट करने पड़ते. फोरकास्टिंग अपने आप में ह्यूज चैलेंज था. बट एनीवे इट वाज अ प्लानिंग कमीशन प्रोजेक्ट, सो इट वाज अ ह्यूज वन. कौन सा मुफ्त में करवा रहे थे वो? राइट, रोड प्रोजेक्ट है, ब्रिज. ये आप प्रोजेक्ट की बात करें, इसका तो ऑटोमेटिकली वो प्रोग्राम होगा. प्रोग्राम में फिगर कौन डालेगा सर? तो फिगर तो डाल दी है, बाकी तो कुछ नहीं करते. किसने कहा? हाँ, बाकी क्या इसके अंदर कैसे करेंगे आप? आप सबसे पहले कोई प्रोग्राम आज तक आप बता दीजिए जो मुझे इन्फ्लेशन को टेक केयर करता हो. मुझे सिंपली बता दीजिए इन्फ्लेशन को कौन केयर कर रहा है? जो आप रिजल्ट ड्राइव करते हैं, इन्फ्लेशन के लिए जो रिजल्ट बताते हैं, उसके लिए आप रिसेट तो देता है, डिटेल्स तो देता है ना, ब्रीफ तो इंफॉर्मेशन तो देता ही है ना. कौन देगा? सिस्टम ही देता है. नहीं, कभी नहीं. सिस्टम, ये जो आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, देखिए बहुत लोगों को कंफ्यूजन है ये चीजें. सिस्टम इज लाइक आपके क्लासरूम में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर बोल दिया है. अब आप लोग ये बताइए साइंटिफिक कैलकुलेटर कितना आपको आंसर देगा? आपको पहले डालना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेट करके आपको देगा. आर यू गेटिंग मी? लेकिन वो 99 ईयर का फिगर जो कैलकुलेट करेंगे. अब मान लीजिए वो प्रोजेक्ट था एक्चुअली मोहाली का, ठीक है. अब ट्रैफिक प्रोजेक्शन है. साहब मैं आज बताऊं कि आपको 90 साल के बाद, 95 साल के बाद कितनी ट्रैफिक रोड पे होगी, सर ये कहाँ कौन प्रोजेक्ट करेगा आपको? तो उसके लिए पूरा आपको प्रेडिक्टिव मॉडल यूज करना पड़ेगा ना. वही मैं कह रहा हूँ, मॉडल तो डेवलप होता ही है ना सर. ये नहीं सर, अगर यही डेवलप होता था तो सारा काम आसान होता था, तो फिर फेल्योर कभी होता ही नहीं. बहुत केयरफुल होना पड़ता है. यस, दैट इज ट्रू, केयरफुल. मॉडल मीन्स मैथमेटिकल रिलेशन, but mathematical relation has to be fed.
दैट फिड हैज टू बी देयर। अभी हमने कैलकुलेट किया रिटर्न, ये रिटर्न एक बार आप फिगर डाल दिए, अब आप उसको एक्सेल में डाल दो, जिसमें डालना है डाल दो, वो निकाल देगा रिजल्ट। लेकिन ये फिगर कौन डालेगा, ये कैसे आप डिसाइड करोगे कि देयर इज अ 15% चांसेस मार्केट विल बी बियरिश? नो मॉडल इज गोइंग टू गिव यू। उसके लिए अलग प्रेडिक्टिव मॉडल है, उस प्रेडिक्टिव मॉडल के लिए फिर आप करोगे। मैं कहता हूं कि मैं पॉलिटिकल एक्सरसाइज करना चाहता हूं, और दैट पॉलिटिकल एक्सरसाइज विल डिसाइड कि व्हाट काइंड ऑफ मार्केट इज गोइंग टू बी देयर। सिंपल एक क्वेश्चन है, आज संडे है सर, आप निकालिए कल सेंसेक्स कितने पे खुलेगा, या कल सेंसेक्स का क्लोजिंग क्या होगा। यही पता करना फाइनेंस में सर है। ये जो कह रहे हैं किसको पता है, यही पता करने की कोशिश करना इज एक्चुअली आवर प्रेडिक्टिव मॉडल। जो कल कहां ओपन होगा, परसों कहां ओपन होगा, कल कहां क्लोज होगा, आज जानेंगे तभी तो डिसीजन लेंगे। अगर आज नहीं जानते हैं तो कल जब हो जाएगा तो दुनिया जानती है, और जब दुनिया जान गई तो आपके जानने से क्या फर्क पड़ने वाला है। जब दुनिया नहीं जानती है, प्रेडिक्टिव मॉडल में यूज करके आप यूज कर सकते हैं, देन योर फाइनेंस इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल। क्लियर? सो कैलकुलेशन इज वन डायमेंशन ओनली। डोंट गेट मेस्मराइज दैट मॉडल इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। कल तो मैं कहूंगा फाइनेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड हो गया। सर एक चीज अभी मैं आपसे पूछ रहा था, मैं पूछ सकता हूँ? थोड़ा सा बोलिए, मैं वाइंड अप कर लूं। 2 minutes. I have concluded 2 things. First, how to calculate return, how to calculate risk, expected return, how it is specified through probability. Second, how return risk can be there, and risk through standard deviation. Then I calculated for portfolio return, which was mean return of the invested portfolio, and I calculated portfolio risk, which was having a relationship of that, where even covariance had been used. Then I started calculating capital budgeting. Capital budgeting word itself is pre-happenings related to capital investment. That's why it is called capital budgeting, which has got 2 different methods, non-discounting method and discounting method. Non-discounting method has got payback period method. Even one more method is there, account average rate of return method, ARR is also there. Whereas next is in discounted method, first one is discounted payback period, TBPB, and second one is NPB I had discussed. Next class only 1 hour and the entire capital budgeting will be complete, which will be using including IRR, internal rate of return, how IRR is going to get calculated. And final examination, solid 1 question, internal examination at least 5 marks question, maybe 5 different questions, maybe 3-4 questions. So you at least you can understand you have got a very substantial component today itself discussed. Thank you, thanks a lot.